Good morning, everyone. Can you hear me? Then type yes and chat box. Then we are proceed today's topic. Okay, that is laminar airflow equipments. Good morning, everyone.
or can you see the screen? Okay, so let's see first video, then we are going to explain it again. Okay. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट्स। लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट्स जैसे कि लेमिनार फ्लो कैबिनेट या फिर लेमिनार फ्लो क्लोजेट या फिर टिश्यू कल्चर हुड जो होते हैं वो आपको इनक्लोज बेंच होते हैं, मतलब कि एक चारों तरफ से सराउंडेड बेंच होते हैं जो कि आपके स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और इसमें किसी तरह का कोई भी गैप या जॉइंट नहीं प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं कि जो सेमीकंडक्टर वेफर्स हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं या फिर कोई पार्टिकुलर सेंसिटिव मटेरियल है उनको कंटामिनेशन से प्रिवेंट किया जा सके। जो लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपको वर्टिकली, हॉरिजेंटली या फिर कर्वीलिनियर डायरेक्शन में आपको क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं। जो एयर फिल्टर्ड होता है इस लेमिनार एयर फ्लो से वो आपको कहा जाता है कि 99.97% आपके माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री होता है। और ये जो लेवल होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो डायोक्टिल पैथलेट पार्टिकल्स हैं जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है या उससे ज्यादा, उनका रिमूवल हो चुका है, मतलब वो नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसी डस्ट पार्टिकल पे सर्वाइव करते हैं। जो एयर वेलोसिटी है सारे पार्ट्स में फिल्टर के वो आपके 90 ± 20 फीट पर मिनट या फिर 0.54 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। अब देखते हैं कि लेमिनार एयर फ्लो के पार्ट्स क्या होते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको फिगर ड्रॉ कर रखा है एक वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो का और हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो का। ठीक है, लेमिनार फ्लो हुड में आपको बेसिकली एक फिल्टर पैड होता है, एक फैन होता है और एक हेपा यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हेपा फिल्टर है, यहाँ पे हेपा फिल्टर है। ठीक है, यहाँ आपका हेपा फिल्टर है। ठीक, तो फैन जो होते हैं वो आपको इन फिल्टर्स के थ्रू एयर को सक करते हैं और डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद प्री फिल्टर्ड जो एयर होते हैं वो आपके पास करते हैं हेपा फिल्टर से, जहां पे जो भी आपका कॉन्टेमिनेशन प्रेजेंट होता है जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, डस्ट एक्सेट्रा, उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद जो स्टेराइल एयर फ्लो है वो आपके वर्किंग एरिया जहां पे भी आपका काम चल रहा है वहां पे पहुंचता है और वहां पे आप सारे फ्लास्किंग वर्क विदाउट रिस्क ऑफ कॉन्टेमिनेशन कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन लेमिनार एयर फ्लो में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एयर का आपका इनटेक हुआ, फिर वो आपका ब्लोअर के थ्रू मतलब कि फैन के थ्रू पास करता है, तो यहाँ से फिल्टर होता है, फिर वो हेपा आपके फिल्टर में जाता है और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है। यहाँ से फिर जो अननेसेसरी है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और जो ये हेपा फिल्टर से पास होते हुए प्यूरिफाइड एयर आपको एरिया में पहुंचते हैं। वो अगर हम हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो की देखें तो यहाँ पे आपको देखिए कि एयर आता है। ठीक है, यहाँ से फिल्टर होके रूम एयर में यहाँ पे एयर आता है, फिर वो ब्लोअर से पास होते हुए आपको हेपा फिल्टर से पास होते हुए आपको वर्किंग एरिया में जाता है। आपके जो हेपा यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स होते हैं वो फिल्टर्स ही आपको एयर की फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो ये फिल्टर्स जो होते हैं वो आपके प्लीटेड फाइबर ग्लास पेपर होते हैं, मतलब ये जो होता है ना, जैसे हम पेपर को अगर प्लीट्स में फोल्ड करें तो कुछ इस तरह का होता है और ये आपको यूज होता है एज अ फिल्टर मीडियम।
ये फिल्टर जो होता है बेसिकली आपको फिल्ट्रेशन मटेरियल जो कि आपका प्लेटेड फाइबर ग्लास पेपर होता है उसका एक कंटिन्यूस सीट होता है जिसके अंदर कॉरुगेटेड सेपरेटर होते हैं और ये आपको एक सील्ड रिजिड मेटल फ्रेम के अंदर होता है। जो एल्युमिनियम फॉइल होते हैं वो आपको हेपा फिल्टर्स के बीच में सेपरेटर फॉर्म करते हैं। तो अब देखते हैं कि एयर सप्लाई क्लीन रूम, यानी क्लीन रूम इन सेंस कि आप जो लेमिनार फ्लो के थ्रू एयर जो आप एरिया में पहुंचाते हैं वहां पे जो एयर है वो कैसे आपका सर्कुलेट करता है, वो कैसे वहां पे एयर की सप्लाई होती है। तो जो भी एयर आपको क्लीन रूम में सप्लाई होती है वो आपको हेपा फिल्टर से पास होनी चाहिए। ये हेपा फिल्टर आपको पोजीशन होने चाहिए मेनली आपके क्लीन रूम के जस्ट इनलेट पे, और एक प्री फिल्टर होना चाहिए जो कि आपको फिल्टर के ऊपरी हिस्से में सेट होना चाहिए, जिससे कि जो फाइनल फिल्टर है वो आपका प्रोलॉन्ग रहे, मतलब कि ज्यादा फ्री ऑफ कंटामिनेशन रहे। बेसिकली आपको जो हेपा फिल्टर्स होते हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं कि मॉनिटर कर सके कि हेपा फिल्टर की क्वालिटी क्या है, मतलब कि उसकी क्वालिटी सही प्रॉपर वे में वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये जो फिल्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है इस तरह से कि वो आपको क्लास 100 एयर प्रोवाइड कर सके, और वो सर्टिफाइड होता है आपके हर 6 से 12 मंथ्स के अंदर। जो एयर क्वालिटी है उसको इवेलुएट करते हैं सेटल प्लेट्स या फिर माइक्रोबियल एयर सैंपलर्स या फिर पार्टिकल काउंटर से। जो वेलोसिटी होती है हेपा फिल्टर्ड एयर की वो आपको एयर वेलोमीटर से मेजर की जाती है, और जो फिल्टर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी कि वो आपके पार्टिकुलेट या फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रिमूव कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको इवेलुएट करने के लिए डायोक्टिल पैथलेट डीओपी टेस्ट एम्प्लॉय किया जाता है। अब देखते हैं ये टेस्ट क्या होता है। तो डायोक्टिल पैथलेट टेस्ट जो होता है ये आपको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल चैलेंज टेस्ट होता है हेपा फिल्टर्स के लिए। जो डाईऑक्टिल पैथलेट स्मोक को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है प्लेनम और फोटोमीटर ड्रॉप स्कैन्स के थ्रू उनके सरफेस पे फिल्टर के सरफेस पे स्मोक पार्टिकल्स के लिए। फिर डाईऑक्टिल पैथलेट जो होता है वो आपको एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है और अंडर प्रेशर ये आपको वेपर या फिर स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका पार्टिकल साइज जो होता है वो 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर रेंज करता है। अगर लीकेज होती है फिल्टर में तो वो आपको डाईऑक्टिल पैथलेट पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं कि वो एस्केप कर सके, मतलब वहां से बाहर जा सके, जिससे कि जो कि आपका डिटेक्ट हो जाता है फोटोमीटर से। जो सेंसर्स होते हैं वो आपके अपस्ट्रीम मतलब कि ऊपर की तरफ फिटेड होते हैं, और डाउनस्ट्रीम में आपका फिल्टर्स होता है जो इंडिकेट करता है आपका प्रेशर डिफरेंशियल फिल्टर के अक्रॉस। ठीक, एक अलार्म सिस्टम आपको यूज किया जाता है ये इंडिकेट करने के लिए कि एयर सप्लाई फेल हो रही है या फिर किसी तरह का फिल्टर ब्लॉकेज है। अब देखते हैं क्लीन रूम में एयर फ्लो पैटर्न क्या होता है। तो एयर फ्लो पैटर्न जो होता है क्लीन रूम में वो आपको केयरफुली रेगुलेट किया जाता है, जिससे कि क्लीन रूम में किसी तरह का कोई पार्टिकल जनरेट ना हो सके, एंटर ना कर सके। एक जनरल एयर फ्लो पैटर्न जो क्लीन रूम में होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो या फिर कॉम्बिनेशन एयर फ्लो। जो यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो होता है उसमें जो एयर होता है रूम के अंदर वो आपको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है एक पैरेलल लाइन पे। देखिए ये है जो आपका एक यूनिडायरेक्शनल एयर है जो कि आपके हेपा फिल्टर से एकदम पैरेलली एक दूसरे के साथ मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। जैसे ही एयर जो होता है वो रूम में एंटर करता है फिल्टर्स के थ्रू वो आपको फिर अपने ऑपोजिट वॉल में आउटलेट की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब देखिए ये यहाँ से फिर यहाँ आता है। ये जो एयर की वेलोसिटी होती है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड होती है। डाउन फ्लो एयर मतलब कि जो सीलिंग से नीचे के साइड जो एयर फ्लो कर रही होती है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलती है, और जो नीचे की तरफ क्रॉस फ्लो एयर होती है वो 0.45 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वेलोसिटी से फ्लो कर रही होती है। ये बहुत हाईली एफिशिएंट एयर फ्लो सिस्टम होता है, बट इसको कंस्ट्रक्ट करना काफी एक्सपेंसिव होता है। सेकेंड है नॉन यूनिडायरेक्शनल
इसमें जो एयर एंटर करती है क्लीन रूम्स में, वो आपको फिल्टर पेपर से एंटर करती है और फिर वो आपके वॉल्स के नीचे साइड में या फिर फ्लोर के नीचे साइड में आपके एग्जिट आउटलेट होते हैं, वहां से फिर वो एग्जिट कर जाती है। जो फिल्टर्ड इनलेट एयर होते हैं वो आपके मिक्स करते हैं डाइल्यूएट्स जो होते हैं कंटामिनेटेड एयर के, जो कि रूम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो कन्वेंशनल एयर फ्लो होता है वो आपको नंबर ऑफ एयर चार्जेस पर आवर के हिसाब से डिफाइंड होता है। यहाँ पे देखिए फिल्टर होके आपकी एयर यहाँ से आए, फिर रूम में ऐसे सर्कुलेट करती है, फिर यहाँ आउटलेट है इसके थ्रू, जो कि आपके वॉल में प्रेजेंट हो सकता है या फिर फ्लोर के लोअर साइड में हो सकता है, वहां से एग्जिट करती है। थर्ड है आपका कंबाइंड एयर फ्लो। ये आपके फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम्स जो होते हैं, बैकग्राउंड एरिया होता है वो आपको वेंटिलेटेड होता है, नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो और क्रिटिकल एरिया आपके यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो से सप्लाइड होते हैं। जो वेरियस वर्टिकल यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो सिस्टम होता है वो आपको यूज्ड होता है कॉम्बिनेशन क्लीन रूम्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको जो होता है वो आइसोलेटर कैबिनेट्स यूज करके जो ट्रेंड होता है आपके कॉम्बिनेशन क्लीन रूम्स को प्रोटेक्ट करने का, उस प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है उसको एडजस्ट किया जाता है कि आपको क्लीन रूम के अंदर प्रोसीजर्स को कैरिड आउट किया जा सके। जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है रिलेटिव टू ह्यूमिडिटी, जो कि आपका 35 to 50% होता है, प्रेफर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेपा फिल्टर से पास होते हुए फिर वो सेकंड फिल्टर से पास करता है। यहाँ पे आपका यूनी डायरेक्शनल होता है और अपर साइड में आपका नॉन यूनिफॉर्म रीडायरेक्शनल एयर फ्लो होता है, और यहाँ पे वॉल में आपका एग्जिट होता है, यहाँ फ्लोर के साइड में आपका एग्जिट होता है, ठीक है। तो ये था अबाउट आपका लैमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर। So today we are discuss about the laminar flow equipments. So in that laminar flow equipments, here consist of laminar flow cabinet, laminar flow closures, and the tissue culture hoods. Okay, and these are all the enclosed in the bench, which is made up of stainless steel with no gases, no gaps or joints. Okay, so these are the combination of laminar airflow equipments. In that it contains cabinet, closes, tissue culture hoods, and they are totally packed with the stainless steel, okay, bench, and it is designed to the prevent contamination of semiconductor waters, some biological samples or any other particles which is the sensitive to the material. That equipment can deliver clean air in a vertical, horizontal or okay unilever direction, okay, or cross lever direction. The air filter from the laminar airflow is claimed to the 99.97, okay, from the microbial contamination, okay, which air pass through that laminar airflow that having the purity around that is the 99.97 purity, okay, and this level it is based upon the removal of dioctyl phthalate, okay, this is DOP particles, and this that particles having size 0.3 micrometer and large, okay, and the velocity of all that particles of the should be less than 90 plus to minus 20, okay, feet per minute. So that dioctophthalate having the velocity of that particle is around 90%, 90 feet per minute, and having the some 20% plus minus, okay. Next one, that is the composition of laminar airflow and their working.
So in that they are having consist of two three parts. That is, the first one is the filter pad, second one fan, and third one the HEPA, that is the high efficiency particulate air filter. It is also called as HEPA filter. So in that, see the diagram. First one, that is the vertical laminar flow, and the second one, that is the horizontal laminar flow. Okay, in our college that horizontal laminar flow is present. Okay, so how they work? That fans that sucks the air through the filter pads and where the dust is trapped. Okay, so firstly fan is the sucks air from the surrounding and they are pass the air from the filter pad. Okay, after the pre-filtering, that air that is to pass to the HEPA filter where contaminating fungi, bacteria, dust are clearly removed. Okay, then sterile air flows into the working area where you can do all your flasking work without dust or risk of contamination. Okay, so this is the working of laminar airflow and their parts here having filter pad, fan and HEPA filter. That fan is sucked the surrounding and they are passed the air by that filtering pad. Okay, after that filtering pad, that filtering pad, the that air is passed to the HEPA filter, and that HEPA filter absorb or avoid the that fungi, bacteria and dust. They are removed from that air and the clean air will be passed to the our that area where you are working. Okay. Next one, HEPA filter. So HEPA filter, in this filter they are filled fiberglass paper. It is used for the filtering media, and that filter is consist of continuous sheet of filtration material, and it is pilked with sealed with the corrugated separated placed between each plate. Okay, and the sealed into a rigid metal flame, and that in that between separator that aluminum foil is used for the spare in the HEPA filter. Okay, so if you are see the HEPA filter diagram of HEPA filter, so here they are uh, they are prepared by the fiberglass paper. Okay, and in that fiberglass paper they are having the filtration material and they are corrugated with the separated. Okay, and the rigid metal frame here used for the HEPA filter. Also they are used aluminum foil for the space in the HEPA filter. Okay, next one, that is the air supply in the clean room. How that air supply? The air supply in the clean room to a consist must be filtered through the HEPA filter, and the HEPA filter must be positioned at the inlet for the clean room, and the pre-filter may be fitted upstream of the filter. Okay, to the HEPA to prolong the life of the final filter. So that control the procedure must be adopted by the evaluated and the monitor quality of HEPA filter. These filters are supported to provide a class of 100 air. Okay, and they should be certified after the every 6 to 12 months. Okay, so after 6 and 12 months we are certified that HEPA filter is working as a standard or not. Okay, so their standard, that is the 100 air should be passes. Okay, through that HEPA filter, and that air quality also evaluated using the settle plates, microbial air samples and the particulates counts. Okay, and so that your velocity of HEPA filter air is also measured using the air velometer, and the efficiency of filter in the removing particulate and the microbial contamination is evaluated by the employing
diacto diactophthalate test. Okay, that is DOP test. So these are the some evaluation criteria where your HEPA filter is working or working as a standard or not. Okay, for the cleanup area, and mostly that cleanup area, the clean air should be passes to the HEPA filter. Okay, and what is DOP? So dactyl phthalate. That test, it is universally acceptable challenge test for the HEPA filters, and that dactyl phthalate smokes is introduced at that supply of the year. Okay, after that supply of year, that dactyl phthalate smoke, check whether it is passed to the that HEPA filter or not. Okay, so that pallium and photometer probe scan the surface of the filter for the smoke particles. If that smoke is present on that filter, HEPA filter, then it is absorb. They are remove the smoke from the air. If not see the smoke on that HEPA filter, then their test of the dactylphthalate is fail. Okay, the dactylphthalate is a volatile liquid, and under the pressure it is continuous vapor or the smoke having the size range of the 0.3 to 0.4 micrometer. If they are having the leakage in that filter, will be permit that dactyl particles will be expressed, and this is will be dictated by the photometer, and that sensors are the fitted upstream and the downstream the filter, and that indicate the pressure differential across the filter, and an alarm system should be used to indicate the failure in the air supply filter blockage. Okay, so got it how that DOP is work. So here here use the DOP smoke, and that passes through that ear. If they are having the leakage in the HEPA filter, then that DOP particles will be escape. Okay, and this escaped particles will be detected by the photometer. Also that sensor it is getting indicate that the pressure of differential, okay, across in the filter paper. And next one point, that is the airflow pattern. So in that airflow pattern, they are having the three in general pattern, that is unidirectional airflow, non-unidirectional airflow, and the combinational airflow. So unidirectional airflow, that air is within the room masses with the uniform velocity along with the parallel flow lines. If that air passes to parallel flow line one direction, okay, so that air enters the room through the blank bank of filters, okay, and that exits through the bank of outlet, compromising the opposite wall as a floor. Okay, so velocity having that air that about 0.3 meter per second in the downfall flow airflow, that ceiling flows velocity, that is the 0.45 ms. Okay, next one direction, that is the non-unidirectional airflow. So that air enters into the clean room through the filter, and it is accessed outlet duct, which is the positioned low down of the wall in the airflow. Okay, that is site of removed at the inlet, and that filter inlet are the mixed with the dilutes contaminated air within the rooms. That conventional airflow is defined in the term are the number of air charge per hour. Okay, see how that unidirectional it is the that air is passes to one direction. So in that non-unidirectional, they are not having the any direction. Okay, so because they are having the separate two inlet, okay, in the downfall of the wall. Okay, next one, combined airflow. So in the pharmaceutical clean room area, the background air of the
ventilated by the non-unidirectional airflow and the critical directional are the supplied with the unidirectional airflow. The various vertical unidirectional airflow system are the used in the combination for the clean rooms, and inverse has been trained towards a protective and critical procedure within the combination of clean rooms by using the isolated cabinet. The temperature and the humidity are the adjusted to the suit the procedure being the carried out within the that clean area. Okay, and temperature it is about the 20 to 22 degree Celsius with the relative humidity of about 35 to 50 degree percentage of the optimum pressurized. So relative humidity it is the range between the 35 to 50%, and the temperature it is about the 20 to 22%. Okay, see how that combination, that is the unidirectional and the crosswords, okay, critical, okay, areas. So here use two HEPA filters, one is here and another is between the room. Okay, so in that place they are having the unidirectional, and here that again difference between that changes. Okay, so here we are stop here. We have completed today's point, that is the laminar flow equipments. In that laminar flow equipments, so they are having the cabinet closest, okay, and the tissue culture which is packed with the glass. Okay, thank you. Attendance link will be shared view, already shared. Click and fill the attendance for today's lecture. Those fail to fill that attendance link will be considered as a absent. No need to put a roll number in chat box. Okay, just click on link and fill the form. If having any query, any doubt to related to point, put on that form. We will solve on next lecture.